Good evening. So first we will complete the 4 or 5 questions from the previous class sheet. First we'll complete those questions and then we'll start with the theory of boats and escalators. We have seen enough time, speed, distance, so there is very little theory for boats and streams and escalators. We'll be done with that pretty quickly. All right, let us start. So it's our 7th session on TSD here. So Jorah and Dany. So a bit of Game of Thrones. Give it a shot. Give it a try. Jorah and Dany are running around a circular track in clockwise and anti-clockwise directions respectively. So Jorah goes along the clock, Dany goes against the clock, anti-clockwise. They start from same point and at the same time and meet for the first time at a point which is 400 meters in clockwise direction from the starting point. The second meeting takes place at a point which is 600 meters starting 600 meters from starting point measured in anti-clockwise direction. Jorah had completed more than a lap when they met the second time. So basically the first question is what is the length of the track? What is the length of the track? Give it a shot. What is the length of the track? You want to form equations, you want to use options, totally up to you. They are running around a circular track in opposite directions. They start from same point at the same time. When they meet first time, it is 400 meters clockwise. Second time when they meet, it is 600 meters anti-clockwise. And the question mark is, what is the length of the track? How much is the length of the track? Comment your answers once you reach answer. Now you remember when I covered the theory of circular races today earlier, I showed you the derivation how points are found. Along this direction, if the first meeting happens after 400 meters, the second meeting should happen
again after traveling 400 meters. Now there are two possibilities. One possibility is the total circle has a length less than 800, this, or total circle has a length more than 800. If total circle's length is more than 800, that would mean the distance from this side measured is 600. So if that is the case, either this is the answer or this is the answer. Other two cannot be answers because second meeting point is 600 meters anti-clockwise. Let me check. How do I check? See, Jora for the first meet, Jora has traveled 400 meters. So Danny must have traveled 1000 meters. So the ratio of these speeds is 2 by 5. Ratio of these speed is 2 by 5. Now, can I say if the first meeting is happening here, and second meeting is happening here, then Danny has traveled more than one circle. Danny has traveled one circle plus 600. Danny has traveled 2000. Danny has traveled 2000 meters. How many meters has Chara traveled? 400, 400, 800. Is that ratio same? Does that ratio look same to you? 2 by 5. Yes, that seems to be correct. Do we have any other hint here? Oh, we did not use this hint. Language सुनना. अरे ये तो खत्म हो गया आपका सवाल. Jora had traveled or completed more than a lap. Jora has completed more than a lap. बेटा यही आपका इकलौता आंसर है. This is the only value below 800. Jora ने एक लैप से ऊपर कंप्लीट किया है. See, other option would be this. अगर एक लैप पूरा नहीं हुआ है, आंसर इज 1400. Jora has completed more than one lap for the second meet. The total circle length is below 800. Answer is B Bombay. ये समझा क्या? मैं आपको B Bombay से भी प्रूव करता हूँ. Ratios will remain same. ध्यान देना. If the track length is 700, when Jora completes 400, Danny must have completed 300. When the second meeting happens, I am saying Jora completes 800. Danny must complete 600. देखो मैच हो गया ना. पहला मीटिंग में एंटी क्लॉकवाइज शी ट्रैवल्स 300. दूसरा मीटिंग में एंटी क्लॉकवाइज शी ट्रैवल्स 600. एवरीथिंग मैचेस. देखो सेकंड मीटिंग में व्हाट हैज शी ट्रैवल्ड? 600 meters from the starting point. Everything matches. Also, once you confirm the circle length, you confirm their speed ratio. 700 का circle है. Jora is completing 400. Danny is completing 300. The speed ratio is 4 by 3. What is the speed ratio of Jora and Danny? All parts length will be equal. Absolutely. Measured in one direction, the length of those intervals will be equal. Absolutely correct. Yes. This is a CAT level question because the information was partially hidden from you. We can have more angles in this. We can have more layers in this. But even at this stage, yes, CAT like question hai ye. बेटा 600 एंटी क्लॉकवाइज है. 400 are clockwise. ये देखो 400 are clockwise. 600 is anti-clockwise. देखो ना, ये देखो अगर ये 700 का सर्कल है, this is circle of 700. Jora has completed one loop which is 700 plus 100.
प्लस 100, तो हाउ मच विल डैनी कंप्लीट? अगर डैनी को मिलना है यहां से तो डैनी हैज टू कम हियर, तो डैनी हैज ट्रेवल्ड 600 एंटी क्लॉकवाइज। मैच हो रहा ना, एब्सोल्युटली मैच हो रहा। 600 एंटी क्लॉकवाइज है, 400 क्लॉकवाइज है, तो 700 मीटर्स का अगर सर्कल हुआ तो 400 तो आगे 100 निकल गया ना, 700 से आगे से 100 निकल गए, तो डैनी अपोजिट साइड से आएंगी एंटी क्लॉकवाइज, तो शी विल हैव टू ट्रैवल 600 मीटर्स फॉर सेकेंड मीटिंग। चलो, A and B are running a race of 8.4 kilometers on a circular track of length 600 meters. They run in same direction with speeds in the ratio of 2/3. Each time they meet, B gives A an amount which is equal to the number of their meets. That is, for first meet 1 rupees, for second meet 2 rupees, and so on. How much money was collected by A, or how much money has A collected by the time they finish the race, by the time he finishes the race? कितना पैसा कलेक्ट कर लिया है A ने by the time he finishes the race? Go on, solve. Give it a try. A and B are running a race of 8.4 kilometers. One circle length, one track length is 600 meters. They run in same direction. The speed ratios are 2/3. Every time B meets A, he gives A some rupees which are equal to the meeting time, meeting number. If it is first meet, take 1 rupees. Second meet, 2 rupees. Third meet, 3 rupees, and so on, so on, so on. How much money will be collected by A by the time he finishes the race length? Who is the faster one? Please pay attention. B. B अपना रेस खत्म करके चला जाएगा ना, ₹105. Okay, let me solve. देखो, first of all, 600 multiplied by 14
is equal to 8400 meters. 8400 meters mean 8.4 kilometers. So जो भी faster person है, I want that person to complete 14 loops. Faster one completing 14 loops means end of the race. अब A को भागने दो ना. When A finishes race, उससे पहले B निकल चुका है after completing his race. So I have to find out B ने जब complete किए 14 circles, how many times have they met? थोड़ा ध्यान से देखना. When A completes 2 loops, B completes three loops. Direction क्या है? Direction is same. That means B has traveled 1 loop extra. तो जब B के 3 लूप होंगे वो एक बार मिलेगा A से. जब अगले 3 लूप होंगे तो वो सेकेंड टाइम मिलेगा. जब अगले 3 लूप होंगे तो वो थर्ड टाइम मिलेगा. अगले 3 लूप होंगे तो वो फोर्थ टाइम मिलेगा. फोर्थ टाइम. अभी कितने लूप हो गए? 12. बी को 3 लूप करने पड़ेंगे टू मीट विथ ए. अब आपको क्योंकि 14 लूप करने हैं तो बी को 2 लूप्स करने पड़ेंगे. तो वो ए से मिलेगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल. तो वो ए को मिलेगा एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार. 4 बार. तो व्हाट रुपीज विल ए हैव? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज. ए विल हैव 10 rupees with him. Please observe how the question has been framed. Please observe. What is going on here? Direction is same. Every time B travels 1 extra circle, they meet. So to travel 1 extra circle, B के 3 loop हो गए total. 3 loops, 1 meeting. 3 loops, second meeting. 3 loops, third meeting. 3 loops, fourth meeting. So total 12 loops. 14 करवाने हैं. तो when B travels 2 loops, तो 3 पूरे थोड़ी हुए हैं. अगर 3 पूरे नहीं हुए हैं तो he won't be able to meet. There will be no meeting here. He will not be able to meet with A. Loop पूरा नहीं हुआ इनका. So they have met 4 times. So total money given will be 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10 rupees. Everyone confirm? You are able to keep up with this? कोई बड़ा इक्वेशन नहीं चाहिए. I can show you online. These questions are being solved by assuming distance, ये speed. और ये क्या कर रहा है? Focus on loops. चलो, moving on. If they run in opposite directions, how much money would A have under same rules? What are the rules? 600 meter length, 14 loops means complete race. What are the speed ratios of A and B? Speed ratios are 2 and 3. Because directions are opposite, the number of meeting points is the addition of the ratios. Follow the language. Follow the language. When B completes 3 circles, they have already met 5 times. 5 बार मिल चुके हैं. When B completes another 3 circles, 5 बार और मिल चुके हैं. When B completes 3 circles, they have again met 5 times. B completes 3 circles, they have again met 5 times. 12 बार हो चुका है. Please pay attention. 12 बार हो चुका है. If I want B to complete 2 circles, थोड़ा ध्यान से देखना. अगर ये 2 हो जाएगा तो can I say I am multiplying 2 by 3? तो बेटा 2 by 3 इधर भी लगेगा. So they would meet 3 1 by 3 times. 1 by 3 times होता है क्या meeting? They will meet 3 times. So total loops 14 करने हैं. Faster one completes 14 loops. तो रेस हट गया उसका. Complete हो गया रेस. He is gone.
So how many times will they meet? 5 plus 5 plus 5 plus 5, 20 meetings. 20 meetings plus 3, 23 meetings. 5 meets, 5 meets, 5 meets, 5 meets and 3 meets, 23 meets. पैसा कैसे मिलेगा? पहली मीट का 1 रुपी, second meet 2 rupees, third meet 3 rupees, fourth meet 4 rupees. When you go to 23rd meet, 23 rupees मिलेगा आपको A को. This is called addition of natural numbers. 1 plus 2 plus 3 up to n. The formula is n into n plus 1 by 2. 23 into 24 by 2. Cancel 12. 12 into 23. 230 plus 46. 276 rupees will be given to A by B. So आखिरी में please pay attention. How did we adjust that value 2 and 3, 2 and 3? Please focus on that. 3 loops में they meet 5 times. तो 2 loops करने के लिए I have to apply a ratio there, 2 by 3. तो 5 into 2 by 3 is 10 by 3. तो 3 बार मिलेंगे complete. Confirmation on this? Moving on from this. In a 100-meter race, Amit gives Bishnu a start of k meters. K is more than 20. What is the meaning of this? Amit will start from his starting point and Bishnu will start ahead. By k meters, k is more than or equal to 20 meters. And is beaten by m meters. Amit जो है, इन्होंने विष्णु को बोला तो आगे से स्टार्ट कर, और हार गए by m meters. That means जब विष्णु कंप्लीट कर लेगा रेस, तो जो अमित है ये m मीटर पीछे है. And m is less than equal to 20. 20 यहाँ उससे कम है. If speeds of both are distinct, which of the following cannot be the ratio of speeds of Amit and Vishnu? इनमें से कौन सा उनकी स्पीड का रेशो नहीं हो सकता? Which of these cannot be the ratio of their speeds? बनाओ. Which of these cannot be the ratio of the speeds? Out of 4, one option cannot be, other 3 can be. Amit and Vishnu.
अप्लाई कॉमन सेंस, गो बैक टू बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक में जाओ। थोड़ा समझो इस बात को। डू यू अंडरस्टैंड, बिकॉज द टोटल मीटर्स आर 100, डू यू अंडरस्टैंड, जो विष्णु नाम के पर्सन है वो के मीटर आगे से शुरू किए। सो विष्णु इज ट्रैवलिंग व्हाट, विष्णु इज ट्रैवलिंग 100 माइनस के मीटर्स। क्योंकि के का वैल्यू 20 से ज्यादा है, तो विष्णु जो है वो 80 मीटर से कम ट्रैवल करते हैं। विष्णु ट्रैवल्स लेस देन 80 meters. एंड हाउ मच डज अमित ट्रैवल, देखो पूरा डिस्टेंस 100 है, बट अमित ने रेस पूरा किया क्या? नहीं, अमित इज अ वेरी स्लो पर्सन, वो यहीं कहीं पर जाकर थक हार गया। बट 100 में से कितना कम ही हैज ट्रैवल्ड, 100 में से m मीटर्स। m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू, इट इज व्हाट, इट इज मोर देन 80। क्यों इट इज मोर देन 80? क्योंकि m का वैल्यू 20 से कम है। अब देखो, अगर ये स्पीड का रेशो होता तो हाउ कैन आई मेक इट मोर देन 80? मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। सो आई कैन सी, अगर ये 14 टाइम्स हो जाए, सो दिस बिकम्स 84, और ये 70 हो जाए। डू यू सी 70 इज लेस देन 80 एंड 84 इज अबव। अब बड़ा मल्टीपल लो, चलो इफ आई टेक इट 15 टाइम्स ऑल्सो, 15 गुना 15 टाइम्स, तो 90 एंड 75। और अभी भी आप देखो, it is what, above 80 and this is below 80. So in multiple ways it could be 6 by 5. क्वेश्चन क्या था? which of the following कैन नॉट बी, नहीं हो सकता। आपने पकड़ तो लिया होगा अभी। आई वॉन्टेड टू बी अबव 80, कैन आई मेक इट 21 टाइम्स? 21 टाइम्स क्या होता है? 84। 21 टाइम्स क्या होगा? 63। इज इट अबव 80? यस। इज इट बिलो 80? यस। पॉसिबल है ये सब। इसको ट्राई करो, 12 टाइम्स कर दो। 12 टाइम्स इज 84, 12 टाइम्स इज 60। इज इट अबव 80 एंड बिलो 80? एब्सोल्युटली, सब हो सकता है। अब यहां देख लो आप, कैन यू मेक इट अबव 80? क्या लगाना पड़ेगा? 9 टाइम्स 81। जैसे यहां 9 लगाया तो यहां क्या आ गया? 90। खुद सोचो, दिस इज बिलो 80, दिस अबव 80, सो अमित का स्पीड इज मोर देन विष्णु। ये तो आंसर वैसे भी कभी नहीं हो सकता था। बट आई वांटेड यू गाइस टू लर्न द लिमिट पार्ट्स। लिमिट वाला पार्ट भी सिखाना था मुझे आपको। अमित का स्पीड इज मोर देन विष्णु। तो कितना थॉट गया होगा इसको फ्रेम करने में। चलो, so that was the last question of our previous class sheet, that was linear races and circular races. That is over, that is ended for us. Upstream, downstream, there is very small amount of theory. Then we have traveling on escalator, hardly 10-12 minutes of theory, and then questions. Enough questions are there. So when a person is traveling on a road, if that person maintains speed while going and while coming back, so it will take him same time. Why? Because the distance is same, speed is also same, so time has to be same. But what happens when somebody travels on a stream or flowing water? If this is water, and if the person is trying to go in the same direction as water, the water helps the movement. That is called down the stream. Down the stream is along the water, along the stream. When a person tries to go opposite to the water, flow of water,
So water brings back the person or pushes the person back. That is called upstream. Upstream is against the water, against the stream. So there are few standard terminologies used here. If a person goes to a point, let us say a person swims from uh, Good Luck Chalk to FC College gate, and there's a stream going on. Let us assume the world has ended and all those things. So the person, let us say, is being helped. तो जाते टाइम आसानी होगी, टाइम कम लगेगा, आते टाइम ज्यादा लगेगा. So what I'm trying to say is it is not going to be same time. When a person travels on the stream, the time along with the stream will always be less, and the time against the stream will always be more. Common sense. So some standard terms that we use here. When water is not moving, the speed of water is zero. So whatever movement happens, it is because of the speed of the boat. Please follow the language. This is called the natural speed of the boat or speed of the boat in still water. पानी रुका हुआ है. So when somebody says speed of the boat is 6 meters per second in still water, वो आपको बोट का स्पीड बता रहा है, पानी का बात नहीं कर रहा. There is one possibility. If a person is here, water is moving right side, the person is going in the same direction. So when an outsider sees, outsider means a person outside the stream sees, he will notice the water is pushing the person forward. The speed increases. This is called downstream. Speed downstream, along the water, downstream. Speed is boat plus water. Very elementary stuff, but आसान चीज है. When the person is moving against the water, water is going right side, the person is trying to go left side. An observer outside, बाहर जो observer है, that person will notice पानी इसको वापस लेके आ रहा है. This is called upstream speed. पानी के against speed. Boat minus water. That's it. यही basic theory of streams. Take your time. Copy this down if you feel it is needed, and you can further manipulate these values. मैं अगर इसको और इसको ऐड कर दूं, डाउन प्लस अप, तो बोट का स्पीड डबल मिल जाएगा. तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू हाफ डाउन माइनस अप. You can further find out speed of water is equal to half speed of down minus speed of up. ये बार बार ना एस लिखने का जरूरत नहीं है. बोट का स्पीड बी है, बी बॉम्बे, और वाटर का स्पीड डब्ल्यू है. डाउनस्ट्रीम का स्पीड डी है, अपस्ट्रीम का स्पीड यू है. So don't have to write S again and again. Take your time, copy all of this down, comment done. Clear है? Very good.
हाँ, not necessarily, वो लॉजिक आपका लिखा है, not necessarily correct. I just saw. हाँ, one thing I want you guys to observe is, आप जब एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं विथ योर फ्रेंड, दिस इज अ ट्रेन का स्पीड कुछ भी हो, let us say 100 kmph. When you and your friend are inside the train and I want to find your relative speed, तो मैं केवल आप लोगों का स्पीड प्लस और माइनस करूंगा, ट्रेन का मैटर नहीं करता. स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट मैटर. सेम इज ट्रू फॉर वाटर. अगर वाटर मूव कर रहा है, whether it is going right or left with whatever speed, does not matter. If one boat is trying to catch another boat, the only thing that will matter is speed of these two boats. Water does not matter. Don't complicate things. Let us say there's a gap of 200 meters between them. This boat is going away with the speed of 5 meters per second, and the other boat is trying to catch with the, let us say, speed of 11 meters per second. तो कैच कब कर पाएंगे? There's a gap of 200. Within speeds, there's a gap of 6 meters per second. How much time is needed? So 200 by 6, your job is done. Movement of the water does not matter, just like here, movement of the train does not matter. When two particles are on the same medium or are moving with the same medium, motion of the medium does not matter. और इसमें एक डाउट आता है, सर what if the other person is going against? ये क्या था? They are both going with the water. यहाँ आप देखो ना, इन द ट्रेन, अगर आप अपने फ्रेंड को मिलने भी जा रहे हो, ऐसा नहीं आपको ज्यादा पुश करेगा ट्रेन, उसको कम करेगा. नो. So direction is same or direction is opposite. Movement of the medium does not matter. Write down these wordings or write down this phrase. Movement of the medium does not matter. Movement of the medium does not matter. Moving on. So that was the basic. That was the basic of upstream downstream. Basic से formulae हैं, basic से questions हैं. अब question difficult क्यों होते हैं? Please understand. Why are the questions of this topic difficult? Solve नहीं करवाऊंगा. I'll just show you the working of this particular problem. Let us say water का speed is 2 kmph. 2 kmph. Let us assume that. रमेश हैं जो 12 किलोमीटर अगेंस्ट द वाटर जाते हैं और 12 किलोमीटर वापस आते हैं विद द वाटर, तो 24 किलोमीटर का जर्नी है इन अ बोट, ऑब्वियसली इन अ बोट, अदरवाइज रमेश विल ड्राउन. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ रमेश if he covers all of this in, let us say, 9 hours. 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना is covered in 9 hours. तो what is the speed of Ramesh? Let us say Ramesh का speed R है, तो when going with the water, पानी help करेगा तो speed add होता है. While returning ये subtract होगा. अरे बाबा, I just solved one question, same direction. अपोजिट में आप ऐड कर लो. यस, अपोजिट में आप ऐड कर लेना.
मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम डायरेक्शन, दिस वाज फॉर सेम डायरेक्शन, अपोजिट में ऐड हो जाएगा और क्या। यस, हियर distance upon speed, distance upon speed when added is 9 hours. अब बेटा the problem is this is a quadratic equation. आप जब इसको ऊपर लेके जाओगे, ये 12 को आपने कॉमन ले लिया. Why do questions of boats and stream become difficult is because of this. जब ऊपर आप लेके जाओगे r-2 प्लस r प्लस 2 अपॉन जब मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर -4. नाउ व्हाट यू हैव इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू एंड अप सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और कई बार ये इक्वेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज द नंबर्स आर लार्ज. ऐसा ये सॉल्व करना पड़ेगा. You need to know formula of a quadratic equation, which I'll show you when solving questions. I was trying to show you why do questions become difficult when it comes to upstream downstream motion. To find the speed, you have to create quadratic equations. Ever option replace karo. That is still a better choice. Traveling on escalators. अब ये क्यों अलग है? Observe. When you look at escalator, जो आप ऐसा ऐसा पट्टी ऐसा देखते हो, ऐसा escalator has steps on it. Assuming my drawing is good, ये अच्छी drawing है. यहाँ से travel करते हैं, वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है. But when you look at it from a distance, look at it from a distance, अब वो क्या दिखेगा? एक vertical strip है, उसमें steps लगे हुए, या rectangular strip है, उसमें steps लगे हुए. You'll see in this manner. Let us say it is not moving. ये move नहीं कर रहा है. It is not moving. और आप यहां पर हो and you are trying to go up. और आप count कर रहे हो how many steps you have traveled. Escalator is not moving. Can I say इसमें जितने steps होंगे उतना आपको चलना पड़ेगा. Because it is not moving, your effort is equal to number of steps. Your count is equal to number of steps. Let us say there are 60 steps. Let us say आप सेकेंड डे यही सेम चीज फिर से ट्राई कर रहे हो. You are trying the same thing, but escalator is also moving. So now escalator is going up. When you count your own effort, आपने काउंट किया आपके जो स्टेप्स हैं, इंडिविजुअल स्टेप्स, those are 45. आप यहां से यहां पहुंच गए. If you want to move from here to here, तो 60 स्टेप तो चलने पड़ेंगे, बट आपने 45 चले, तो बाकी किसने चले? एस्केलेटर ने. रिवर्सल. आप मस्ती मजाक के खेलने के मूड में हो एंड यू आर एट द टॉप ऑफ द एस्केलेटर. एस्केलेटर मींस वो चलने वाली सीढ़ियां होती है, दोज आर एस्केलेटर्स. यू आर एट द टॉप ऑफ द एस्केलेटर. इट इज मूविंग अपवर्ड्स, और आप भाग भाग के नीचे आते हो. यू रन स्टेप क्वाइट फास्ट, और आप अपने एफर्ट गिनते जा रहे हो. आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है, एआई लगा आपके दिमाग में, एंड यू आर काउंटिंग द स्टेप्स. आपने काउंट किया, इट टुक यू लेट अस से 90 स्टेप्स. आपको 90 स्टेप्स लगे, लेकिन स्टेप तो 60 है, टोटल स्टेप्स आर 60. दैट मीन्स आपको 30 स्टेप पुश बैक किया. आपको पुश बैक किया 30 स्टेप्स इस एस्केलेटर ने. अगेन, does it not look like to you boats? जब पानी नहीं चलता तो बोट की स्पीड मैटर करती है. When escalator is not moving,
the steps of the person matter. कितने चल के जा रहा है. When they are both moving, they are helping each other. So steps of the person and steps of the escalators add up to n. What is n? Total steps. जब ये opposite जा रहे हैं, the person is trying to come down, escalator is going upwards. Do you see the efforts are subtracted? So steps of the person minus steps of the escalator will be equal to n. तो escalators are solved through steps. Steps को match करके हम इन्हें solve करते हैं. Sometimes the speeds are given of individual or escalator. Sometimes the hint of time is given कि आते टाइम 30 seconds लग गए, जाते टाइम 65 seconds लगे, तो एक हिंट निकल जाता है वहां से. So either speed will be given, 5 step per second का speed है, 3 step per second का speed है, और time will be given. अगर दोनों नहीं दिया है तो speed का ratio दिया जाएगा. One of these three things must be given to solve a question on escalator. आराम से लिखो. It is same as boats in that we add and subtract speeds. In this, we add and subtract number of steps. We add and subtract number of steps taken by these individuals. Likho, confirm that you have taken care of this. Same direction, steps are added, total value n हो जाएगी. Opposite direction, steps are subtracted, total value n हो जाएगी. Confirm once you take this down. क्वेश्चंस बनेंगे. अब आपके पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस बनेंगे. So try this. I'll wait for a minute.
So if you observe a fairly straightforward question, the rowing speed of a man in still water is 13.5 kmph. The river is flowing at 1.5 kmph. It takes the same boatman 60 minutes to row a certain distance and come back. Find the distance. जाना और आना distance same है. So when he goes with the water, the speed becomes 13.5 plus 1.5, 15. जब वो पानी के अगेंस्ट आते हैं 13.5 minus 1.5, 12. तो स्पीड कम हो जाती है. तो व्हाट इज द स्पीड रेशियो? 5/4. Speed ratio is 5/4. So what will be time ratio? Time ratio is 4/5. आपको केवल ये बताना है वो कितना दूर गए थे. जाना और आना सेम डिस्टेंस है. तो ये जो टाइम 4 है ये 4 आउट ऑफ 9 है. टोटल टाइम 60 मिनट्स है. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. तो किलोमीटर पर आवर में आप आंसर ला रहे हो, 60 मत यूज करो, 1 को यूज करो. 1, द टाइम इज 1. सो ये जो है 4/9 का टाइम इनको लगा वाइल गोइंग विद द वाटर. पानी के साथ जा रहे थे. कितना स्पीड था इनका? 15 का स्पीड था. 15 into 4/9. ये डिस्टेंस है. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन. 3 कैंसल्ड, 5. 20/3 is 6.66 किलोमीटर्स. इनको 6.66 किलोमीटर्स मिलेगा वन डायरेक्शन में जाने का. ये क्या किया आपने? वी फाउंड आउट स्पीड का रेशो, उसको रिवर्स कर दिया, दैट इज टाइम का रेशो. टोटल 60 मिनट है. आप ये नहीं करना चाहते. व्हाट अदर वे इज देयर? थोड़ा ध्यान देना, ये आपको मैंने सिखाया इन अर्लियर लेक्चर्स. जब डिस्टेंस को बराबर हिस्सों में ब्रेक किया जाता है तो स्पीड एवरेज इज रिटर्न एज 2ab अपॉन a+b. ये स्पीड एवरेज है. इतनी स्पीड से ये कितने घंटे चले? इतनी स्पीड से ये 1 घंटे चले, 1 आवर. तो ये टोटल डिस्टेंस है. नाउ दिस इज टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज 2d. हमें तो डिस्टेंस निकालना ना. He goes a certain distance and comes back. Find the distance. तो हमें वन वे का डिस्टेंस निकालना है. तो वन वे का डिस्टेंस जाएगा 12 into 15/27. So 3 से कैंसिल 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल 9 टाइम्स, 3 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 4 टाइम्स. द आंसर इज अगेन 20/3. आंसर नहीं बदलेगा. आई एम यूजिंग proportionality here. I am using speed average here. बोट्स का कंसेप्ट केवल इतना था. दिस इज द पार्ट ऑफ बोट्स. तो 2 मेथड्स, बोथ विल गिव यू सेम आंसर क्योंकि मेथड सही है. टेक योर टाइम, कॉपी दिस डाउन, कंफर्म यू आर एबल टू कीप अप विद दिस. कंफर्म, डन. Good. Moving on. Try this. At his usual rowing rate, Rahul can travel 12 miles downstream
in a certain river in 6 hours less than it takes him to travel same distance upstream. अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं और रिवर्सल डाउनस्ट्रीम आने में 6 घंटे कम लगते हैं. सेम थिंग. किससे कम किससे ज्यादा वी कैन कंपेयर. बट इफ ही could double his usual speed, if he could double his usual rowing rate for this 24 mile round trip 24 miles की है, तो वन वे तो अभी भी 12 है. वन वे स्टिल 12. The downstream 12 miles would take only 1 hour less than the upstream 12 miles. What is the speed of current in miles per hour? हमें किसका स्पीड निकालना है? करंट. करंट मीन्स वाटर. अब थोड़ा ध्यान से देखो नंबर कैसे हैं. 8/3, 4/3, 7/3. तो थोड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनेंगे. टेक योर टाइम, गिव इट अ ट्राई. आई गिव यू 3 minutes. Give it a shot. CAT level question, absolutely. In terms of calculation, in terms of equations, absolutely CAT level question.
Good, I can see one answer. Right or wrong, we'll discuss that. बाकी लोग एफर्ट बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ. I'll wait for 1 minute more. So let us go back to again fundamentals. Let us go back to basics. What is being said is Rahul, when he goes 12 miles down the stream, पानी के साथ जब ये जाते हैं, it takes him 6 hours less as compared to traveling same distance upstream. तो पानी के अगेंस्ट जाने में टाइम ज्यादा लगता है. लेट अस अज्यूम राहुल का स्पीड r है और वाटर का स्पीड w. सो 12 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय r माइनस w. पानी के अगेंस्ट राहुल का स्पीड माइनस पानी का स्पीड. 12 किलोमीटर्स पानी के साथ में, दिस इज डाउनस्ट्रीम. पानी के साथ में कितने आवर्स का गैप है? 6 आवर्स का गैप है. बट इफ ही को डबल हिज स्पीड, अगर ये अपना स्पीड डबल कर पाते तो राहुल का स्पीड 2r है, पानी का डिड नॉट चेंज. अब इनको केवल 1 आवर का फर्क पड़ता है, ओनली 1 आवर्स का. तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस आई एम सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w. पानी का speed is w. I am supposed to find that out. So in all such questions, please observe, when I take out 12 common, this r plus w and this r minus w goes in the numerator denominator. This will go above. r plus w minus r minus w का प्लस हो जाएगा. This will go above और ये प्लस हो जाएगा. अपॉन क्या हो जाएगा? r square minus w square is equal to 6. r cancelled. Please observe, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा. Again 12 is common. 2r plus w minus 2r plus w, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वापस. Upon what? 4r square minus w square. ये नीचे कैसा आया? When you have a plus b multiplied with a minus b, you will end up with a square minus b square. That is one. Now I'll teach you one very good trick. बहुत काम आएगा आपको आगे. Never even try to solve these equations separately. You directly put both in a single ratio. देखो ये न्यूमरेटर जो है 12 w plus w, न्यूमरेटर 12 w plus w, ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा भाई. You have, let us say you have 2 upon 5 upon 2 upon 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 7 ऊपर चला जाएगा. सो सेम रेशो में द न्यूमरेटर इज सेम, वो कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? ये ऊपर चला जाएगा आपका 4r square minus w square upon r square minus w square is 6/1.
ये सॉल्व करके W को पुट कर देंगे ऊपर. When I solve this, it will give me what? I'm using it here. 4r square minus w square 6r square minus 6w square इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा. तो 5w square is equal to 2r square. अब अगर ये 5w 2r square के बराबर है तो I can take r square is equal to 5 by 2 w square. इस हिंट को आप कहीं भी पुट कर लो, either you put it here or you put this hint here. आपको स्पीड मिल जाएगा. ये क्या चीज लिखी हुई है? 12 into 2w अपॉन r स्क्वायर माइनस w स्क्वायर. तो ये r स्क्वायर का वैल्यू है ना, 5 by 2 w स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इज इक्वल टू 6. खत्म करो सवाल को आप. कैंसिल कैंसिल 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 4w इज इक्वल टू 3 by 2 w स्क्वायर. w w कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. 8 by 3 इज योर आंसर. No matter how logical I think, I have to go through these steps to be able to reach answer. देखो सुनने में क्वेश्चन कितना सिंपल है, 1 घंटा कम लगा, 6 घंटे कम लगे, बट सॉल्व करने में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऊपर देखो, आई डिड नॉट ट्राई टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर. आई टुक और आई फॉर्म्ड अ रेशो. रेशो बनाने का फायदा क्या? आपके टर्म्स बड़े कम हो जाते हैं. आपका जो न्यूमरेटर था 24w दोनों में कैंसिल हो गया. ये क्या किया हमने? ये जो पहला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनका रेशो ले लिया. दैट रेशो इज 4r स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इज इक्वल टू 6/1. इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने. तो 4r स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इज इक्वल टू 6r स्क्वायर माइनस 6w. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा. ये वन इधर आ जाएगा, क्रॉस. तो नाउ I have 5w square is equal to 2r square. R square is equal to 5 by 2 w square. स्क्वायर ही स्क्वायर चल रहा है. ये वाली जो वैल्यू है, आई रिप्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ये जो r स्क्वायर है ये मैंने यहां पुट कर दिया. तो 5 by 2 w square minus w square. What is the numerator? ध्यान से देखो, it is w plus w into 12. So it is 12 into 2w is equal to 6. I have replaced the value in equation 1. क्लियर है? नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी रिप्लेस करके अज्यूम करके यू कैन नॉट सॉल्व दिस. चलो, try this.
Two boats traveling at 5 and 10 kilometers per hour head directly towards each other. They begin at a distance of 20 kilometers from each other. How far apart are they in kilometers 1 minute before they collide? Collision होने के 1 मिनट पहले how far are these? अब थोड़ा आप सोचो, डज इट मैटर आप और आपका फ्रेंड कहां से आ रहे हो? इफ द क्वेश्चन इज 1 hour before the collision, how far are you? भाई आप अगर कोलाइड करने ही वाले हो तो व्हाट मैटर्स इज आप ट्रैवल कितना कर सकते हो 1 hour में. आप अमेरिका से और जापान से शुरू करो, कब करो, दैट मेक्स नो डिफरेंस. क्या क्वेश्चन है? टू बोट्स आर अबाउट टू कोलाइड. उनका स्पीड क्या है? 10 kmph, 15 10 kmph, 5 kmph. 1 minute before they collide, how far apart are they? One minute, can I say 1 minute is equal to 1/60 hour? तो ये टाइम हो गया. अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो स्पीड रिलेटिव हो गया 15 kmph. So how much distance will they travel? 15 into 1/60, 1/4 kilometers. एक्सीडेंट होने से पहले they have to travel 1/4 kilometers. ये 2004 का, I remember it, 2004 का कैट क्वेश्चन है ये. फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है. ट्राई दिस. Take 1 minute, take 2 minutes. Give me answer. तो 2 स्टेप का सवाल है. क्या कह रहे हैं? When the boat goes from A to B, it is upstream. और वापस आते हैं तो बेसिकली डाउनस्ट्रीम होगा. द टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम A to B is 3 times of the journey from B to A. What is the ratio of speeds of boat and so on so on? अब देखो, if the boat का speed is B, water का speed is W, तो एक केस में ये हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक केस में अपोज कर रहे हैं.
जब अपोज कर रहे हैं तब 3 गुना टाइम लगता है एज कंपेयर टू जब सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस सेम है, खत्म आपका सवाल। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू ट्रिपल टाइम, 3 गुना टाइम, इट इज द सेम डिस्टेंस। कर दो कैंसिल, टी एंड टी कैंसिल, आ गया आपका आंसर 3b माइनस 3w इज इक्वल टू b प्लस w। इसको इधर भेज दो, शिफ्टेड ऑन द अपोजिट साइड। 3b minus b, so 2b, 2b is equal to 4w. What is the question? Ratio of boat upon water. So b upon w, 4 upon 2, 2 upon 1, 2 upon 1, none of these. None of these, 2 upon 1. There should be no doubt, such a simple question, such an easy question. So it's a question from CAT 2000, I don't remember, 8 or 9, very long back, but it highlights a very important point which has been seen in recent years as well. When there's a time difference between cities, so take your time, read everything from here till here, read everything. So what is going on in this question is that cities A and B are in different time zones. The cities are in different time zones. A is located 3000 kilometers east of B. The table below describes the schedule of the airline operating non-stop flights between A and B. All the times indicated are local and on the same day. Assume that the plane cruises at the same speed in both directions. However, the effective speed is influenced by a steady wind blowing from east to west. Normally what happens? There is water moving and water is helping or supporting the boat. In this case,
the plane is flying. Imagine that beautiful thing is a plane. Looks more like an arrow, but that's okay. So if the plane goes along with the wind, so plane is getting that help from wind, does not have to put in more effort. The speed increases. But if the plane goes against the wind, it is facing resistance. So speed will decrease or get impacted by the wind, flow of the wind. And the speed of the wind is this many kilometer per hour, and it is very important. It goes from east to west. So we have to see where is A, where is B, where is wind going. Now the flight departs from B at 8 a.m. Flight arrives at A at 3 p.m. So you cannot say, देखो कि it is a 7-hour flight. You cannot say this. Why? Because A is in a different time zone. अगर A B से आगे है, let us say A is 1 hour ahead of B, तो टाइम जो रहेगा वो 7 hours नहीं रहेगा, वो 6 hours रहेगा. If A is behind B in terms of time, तो ये रिवर्स अप्रोच हो जाएगी वहां पे. What I am trying to tell you here is they are not in the same time zone, so you cannot say the time difference is the actual journey time. So the very first question is, what is the time gap between A and B? And what is the second question? The second question is what is the speed of the flight? What is the speed of the flight in kilometers per hour? So while solving this question, there is one unique method I can show you, tell you. You can use that always to come across that time difference ka problem. You can avoid that problem altogether. सबसे पहले let me draw the diagram. A is 3000 kilometers east. East on a rough paper. Upwards is north, downwards is south, rightwards is east, right side is east. So I get an idea. A is on the right side of B. How many kilometers? 3000. Where is the wind going? This is east. The wind is going east to west. Wind is going in this direction. What is the speed of the wind? That is 50 kmph. Where is the first flight starting from B? The flight starts from B, goes to A, and then from A goes to B. Can I say if the flight starts from B, बीच में कुछ भी करे, it is coming back to B, there is no time gap between B. See, if a flight, let us say there is somebody who did not check his watch. Somebody moved from India to UAE in a flight and then came back to India. And now he looks at his watch. So beta departure arrival ka time, if it is seen at the same city or same country, the time gap does not matter. Here all the flights are running on the same day. देखो गौर से देखो. There is one small adjustment. देखो पहले आप. The flight starts at 8 a.m. and comes back at 8 p.m. तो 12 घंटे हैं total. 12 घंटे. Do you see the flight was stationary between 3 p.m. and 4 p.m. है तो दोनों A में, both the time periods are in A, तो I can say 1 hour. For 1 hour it was stationary. मतलब 11 hour का journey है जाना और आना. When we go from B to A, we are traveling 3000 kilometers. When we come back, we are traveling 3000 kilometers. Flight is being opposed by wind. जाते time B से लेके जब flight जाएगी, so flight is being opposed by 50, और जब वापस आएगी A से, flight is getting help from the wind. ये solve करना है, ऐसा expect कर रहे हैं. You have to solve this. So let me rearrange it for you. See, this will go above, this will go above. दोनों add हो जाएंगे. So it will be 2f divided by f square minus 50 square. Now here I want you to observe and learn this trick. Again, these things come to our mind
when we are under pressure, when we are trying to solve these questions faster in exams, do you see the left hand side number is unique? It is a multiple of 11. This is not a multiple of 11. Denominator cannot give you a multiple in the numerator. Denominator से ऊपर कैसे आएगा? That means this must be a multiple of 11. The speed of the flight must be a multiple of 11. देखो यहाँ पे, look at this. Where do you have a multiple of 11? Here. Check कर लो एक बार. If you can put this value here and confirm if it matches. मैं try करता हूँ. See, 11 is equal to 3000 multiplied by 2 into 550. Denominator पे ध्यान देना. 550 minus 50 is 500. 550 plus 50 is 600. मैं यही चीज लिख रहा हूं here in the numerator, in the upper part here. तो अब देखो आप, ये 0 0 0 0 सब कैंसिल हो गए. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 6 into 5 30 मल्टीप्लाई कर दो. इधर आ गया 330. देखो इधर, what is this? 6 into 55 is also 330. So it matches, both sides are equal. You just found out the flight speed. आपको फ्लाइट का स्पीड मिल गया. What is the trick that I'm trying to show you here is, first is to negate the time zone. आपको time zone को अगर negate करना है, you want to do away with the time zone, तो आप क्या करो, सेम जगह पे डिपार्चर, सेम जगह पे अराइवल करो. बिकॉज ऑफ दिस टाइम गैप नलिफाई हो जाएगा. टाइम गैप डज नॉट मैटर एनी मोर. तो इससे आई फाउंड आउट स्पीड. और उसके लिए भी वी डिड नॉट सॉल्व फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. We did not solve it from there on. What we did reverse is we replaced values. 11 का multiple, अगर 11 का multiple नहीं भी होता, it should be such a number that 3000 is divisible by f minus 50 and f plus 50. 3000 should be divisible by both to get an integer value. Complete this, let me know समझा क्या. अगर ये नहीं करोगे, then you are looking at a very complex quadratic equation. काफी खतरनाक equation बनेगी, complex सी. क्लियर है, वेरी गुड. ऐसा कंफर्मेशन दे दिए करो. आई गेट टू नो क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है. आर वी वेस्टिंग टाइम विद दीज मेथड्स? चलो. सो नाउ कैन यू फाइंड आउट द टाइम गैप बिटवीन ए एंड बी? So you can do this with any of the two journeys. If I look at the journey from B to A, I see 7 hour का journey है. Just subtraction. 8 plus 4 12, 12 plus 3 7. I feel it is 7 hour का journey. 3000 kilometers. अभी A B से A जा रहे हैं, तो wind oppose कर रहा है. 550 minus 50, so 3000 upon 500. The real journey is 6 hours. The real journey is 6 hours. आपके हिसाब से it should be 7 hours because you are doing time gap here. You are calculating time gap here. It looks like 7 hours. But reality में it is 6 hours. So what is the adjustment of time? 1 hour. Between A and B, there is 1 hour का time gap. Between A and B, there is 1 hour time gap.
Clear है? Good. Couple of people have confirmed. Very good. Try this. A and B are stationed at 2 points Q and R respectively on a flowing river. The direction of the flow of the river is from Q to R. When A and B swim towards each other, they meet at P, which is at a distance of 30 meters from R. When they swim towards B and B swims away from A, they meet at S, which is at a distance of 60 meters from point R. B's speed in still water is 4 times the speed at which river flows. Find the ratio of speeds of B and A in still water. तो अलग तरह का सवाल है. The only hint given to you is किधर मिलते हैं, where do they meet. It's a comparison between two scenarios, two cases. Take 3 minutes, give it a shot. So please pay attention. How the question has been framed. The points are Q and R. The individuals are A and B. They are stationed at Q and R respectively on a flowing river. The direction of the flow of river is from Q to R. Water is going in the direction of Q to R. When A and B swim towards each other, they meet at a point P, which is at a distance of 30 meters from R.
here, when they travel towards each other, A and B meet here. The point is called R. Point is called P. P is 30 meters from R. Yes. And when A swim towards B and B swims away, a new condition has been given. So let us draw a new diagram. Q, R, A, B. This is water's flow. So in this case, A is going towards B. A is going towards B and B is moving away. They meet at a distance at a point S, which is 60 meters from R. 60 meters from R. If B's speed in the still water is 4 times the speed of river, speed of B is equal to 4W. Now the question is, find the ratio of speeds of A and B in still water. Because B का वैल्यू W के फॉर्म में है, I would prefer A का वैल्यू भी W के फॉर्म में हो. My job is done. So how do I solve this? How do I go about solving this? कैसे इसको solve करें? I get one hint. In both cases, A is going right side. A is going right side. B का direction change हो रहा है. I am assuming, ध्यान सुनना, I am assuming A का, क्यों चाहिए मुझे? देखो, अगर ये 4W के फॉर्म में, तो मेरे को ये भी W के फॉर्म में चाहिए. W के फॉर्म में चाहिए ये. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये XW है इसका स्पीड. XW. तो जब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, व्हेन यू, आई एम कॉलिंग दिस डिस्टेंस, लेट अस कॉल इट डिस्टेंस D. इस तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस D इज बीइंग ट्रेवल्ड एट व्हाट स्पीड? W प्लस XW. उतने ही टाइम में द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड 30 अपॉन, क्योंकि ये पानी की अगेंस्ट आ रहे हैं, इट विल बी 3W. 3W. देखो WW कैंसिल हो गया, WW कैंसिल हो गया. I'll tell you one more time again. यहां से कैसे हो रहा है? डिस्टेंस कितना है? ये D और ये 30 तो ऑलरेडी था ही था, तो ये टोटल D प्लस 30 है. तो हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज D प्लस 90 with what speed? W plus XW. W plus XW. ये A का स्पीड है. हाउ मच हैज B ट्रेवल्ड? 60. क्या स्पीड से? इसको तो हेल्प कर रहा है पानी. द वाटर इज हेल्पिंग दिस फेलो. पानी इसको हेल्प कर रहा है, तो इसको आएगा 4W plus W, that is 5W. Now see, W is cancelled from everywhere. सब जगह से क्या कैंसिल हो गया? W कैंसिल हो गया. ये वैल्यू कितना? इट इज 12. ये वैल्यू कितना? इट इज 10. आप D निकाल लो, D को इक्वेट करें, W मिल जाएगा आपको. What is this? This is D is equal to 10 into 1 plus W, 1 plus X. 1 plus X. मैं क्यों निकाल रहा हूं इस फॉर्म में? टू अंडरस्टैंड, मुझे रेशियो चाहिए. ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो व्हाट आई विल हैव इज D plus 90 is equal to 12 into 1 plus X. पुट कर दो इसको इधर, आपका आंसर रेडी. X का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया आपका. हाउ डिड इट क्लिक? ये कैसे क्लिक किया मुझे? बिकॉज टाइमिंग बार बार चेंज होगा, बट व्हाट विल नॉट चेंज? द amount of time available in first case for AB and amount of time available for AB in second case is same. मैंने relative speed लगाई नहीं यहाँ पे. If I apply relative speed, फिर वो प्लस माइनस करके इक्वेट करना पड़ेगा, मुझे टोटल डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा. आई लेट अज्यूम टोटल डिस्टेंस इज D. टोटल डिस्टेंस अगर D ले लोगे, तो फिर D माइनस 30, D प्लस 30 हैंडल करना पड़ेगा.
कंप्लीट। बताओ x कितना आ रहा है। इफ आई पुट इट ऑन दिस साइड ये हो जाएगा ये ना करके आप थोड़ा ध्यान देना, अगर आपने यहाँ रेशो भी ले लिया होता, अगर आपने यहाँ रेशो भी ले लिया होता, इफ यू हैड टेकन अ रेशो हियर इटसेल्फ, तो आपको d का वैल्यू मिल जाता। You could put value of d and find out x also. Same thing. तो ये आ जाएगा 44w/4w, तो 11/1 इज द स्पीड रेशो। ए और बी का रेशो 11/1 का है। द स्पीड रेशो फॉर ए एंड बी इज 11/1। Are these cat level questions? Absolutely, no doubt about it. So we'll pick up from next problem in the next session. Only questions are remaining, no more theory. TSD, all theory is done. Probably by next Wednesday or maybe next Tuesday, we will be done with all arithmetic. Yes, good night, guys.